we continue work with all the nations in terms of the close proximity analysis, etc. And in Alliance, I want to tell you that we have almost 63 MOUs with other agencies and nations, and we work very closely with all the big space players as well as emerging space players in various sectors like applications, technology, then business development, space to agency and country to country engagement. So we are in all of them. Thank you. Hi sir, my name is Suraksha. I'm from Economic Times. Can you tell us more about these outcomes that was posted on the website of SCLM? And my second question is, can you tell us something about the launch of Chandrayaan-3? Of course, both are unconnected topics, but still I will tell you about the first part of the question, which is related to the concluding part of the session, which is already been put in the website. As I mentioned about, we elaborated as a chair's summary, as a summary of the finding of this. Because there has been certain strong suggestions. One is that SCLM should be upgraded to a level of a formal agenda in G20, which of course we'll have to report. And on the economy side, that we have given a recommendation that this particular topic of discussion of economy and participation in industries should continue to remain part of the future SCLM, which is going to happen in Brazil, the 5th edition of it. So you will understand that conducting such sessions is a big boon to industries, and the corresponding industries will get benefited. So we would like to see the industry to industry connect, agency to industry connect, because I have been part of many discussions here to see potential business opportunities are created out of such forum. So this is the first part of it. The responsibility part is already highlighted, and we said that we have to move towards a sustainable space. Every lot of concerns have been raised by the members on the increasing number of satellites. You have seen in the last few years, thousands of satellites are being launched, and the rate of increase of the satellites predicted in the future is actually alarming. And we have to make sure that that doesn't really clutter the space, and it has to be regulated in terms of bringing them back after the life is over, and how we are regulating this. Some more clear understanding has to come. This is one of the important suggestions that has come. Third is about the alliances. We looked at the long-term sustainability, which is anyway a big agenda in Corpus, and this is being discussed about in many times. But the bigger part of it is in Alliance, what we suggested in this, not part of the other fora, is how to bring up new countries in space. We found that if only 4 or 5 nations are working on space, then it really doesn't expand in economy. You know, if your mobile phones are only in a few countries, the companies who are producing it will not be able to market it. It has to spread across all the nations. Everybody should get benefit out of it. Everybody should have a pie of it. So it means we must create capability in every space nations, every nation of who are there and part of this space activity should have something to do with space. So we suggested that in India, for example, we are helping our neighboring countries to build satellites, somebody to build some application, somebody to build some rockets. So we are forthcoming and telling that yes, help somebody so that they become better in space. It actually opens new markets. It becomes the whole of the space activity more sustainable, cost effective, affordable for people. So this is what we are trying to do by alliances. Allow alliances to be formed. Do not control it, regulate it too much. Thank you. Sir. Hello, Sagai Raj here from India Today, sir. Sir, ISRO have an agreement with NASA to launch missions in the year 2024 to International Space Center. Is there any kind of discussion or any kind of mission which was been signed in this SCLM meeting, sir? No, we have not yet signed any agreement or MOU on this. This has been a decision at the highest level on having an Indian to fly to international space stations undergoing training in US facilities. So this much is decided at this moment at the highest level, and we have been asked to work out the details of it in the coming days, and an agreement between NASA and ISRO will be signed on this account. What I hope is that we will define how many people are going to be trained, how many people are actually going to fly to ISS, what type of technical and scientific engagement will happen as part of this will be defined in the process of this. We are working out. We are in connected to NASA on and different layers. We are discussing it. Thank you. Sir, namaskar. Rajiv Mishra, Rajasthan Patrika. Yeah.
सर दो क्वेश्चंस है, एक SCLM से है, एक चंद्रयान-3 पर है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर SCLM के दौरान जो नए देश हैं, जो न्यू कंट्रीज़ हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के एरिया में, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनका हमारे देश से, इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और बायलैटरली हमारा किसी देश के साथ इस मंच पे बात हुई है? और दूसरा सर चंद्रयान-3 से है, 14 को हम लॉन्च हो रहे हैं, 14th को लॉन्च हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कैलकुलेशन हुआ होगा कि हमारा लूनर ऑर्बिट इंसर्शन किस दिन को होगा और उसके बाद लैंडिंग किस दिन होगा? तो पहली बात है ये थी, हमारे स्पेस एस्पायरिंग नेशन है, हमारे नाइबर्स से छोटा नेशन है, उसमें जो स्पेस एक्टिविटी अभी तक नहीं डेवलप हुआ है, उन सब से हमारे बातचीत करते रहते हैं। जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उन्हें टू बिल्ड सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल और एप्लीकेशन, तो हमसे ये ऑफर उनके सामने है, क्या आप चाहते हैं तो हमको ये टेक्नोलॉजी देने की पूरी सहमति है। यही है फर्स्ट पॉइंट। सो एंड इट इज ऑफ कोर्स ऑन ए कमर्शियल बेसिस, इट इज नॉट फ्री, ऑफ कोर्स नथिंग विल बी फ्री इन स्पेस। हमारे ये ऑफर है कि हमारे इंडिया में कई इंडस्ट्रीज अभी ये स्पेस में काम करते हैं, उन सब से और उन्हीं नेशन में और राज्यों में जो इंडस्ट्री है स्पेस में काम करने वाले, उन सबको जुड़ाएं, तो उनको रॉकेट बनाने के लिए हमारे ये अपनी कुल है ना, ये देवे के 3D प्रिंटेड इंजन डेवलप करते हैं। क्या ये इंजन अगले एक नेशन में यूज कर पाएंगे, तो उसमें कमर्शियल एंगेजमेंट क्या पॉसिबिलिटी भी है। सो ऐसी डिस्कशन हो रहा है, और कोई कुछ अनेक राज्यों से हमारे ये बातचीत करते हैं, हमारे एप्लीकेशन से जो सैटेलाइट डेटा है, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है, उसमें कंपनी से हम काम करते हैं, उस कंपनी से क्या वहाँ कर सकेंगे, लाइक डाउनलोडिंग एप्लीकेशंस और डाउनलोडिंग द डेटा देयर, प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज देयर, imaging services there, or now for example climate and weather services. So such discussions are going on. One of the small country asked us whether can you help us to develop a new rocket for our nation. Just now I am coming from such a discussion. So we offered that yes, we are ready to help you to build a rocket for you, and we can transfer the technology for that. Earlier there was, nobody will say no, rocket is such a dangerous thing, we will not give you. So the things have changed. Now we are helping people to upskill their capability. So this is first part. On the second part, what you are going to tell is that about the launch of Chandrayaan-3, 14th at 2:35 p.m. is the launch liftoff time, and if the launch takes place on that day, then we will be ready for landing on moon possibly by the last week of August. So the date is decided by when is the sunrise on moon. So where it is landing, sunlight has to be there. Unlike 24 hours a day for Earth, the day on moon is 15 days. So 15 days you will have sunlight, and next 15 days there is no sunlight for one location. So we will have to land on the first day of the 15th day slot of the day. Then we will have life for at least 15 days. So this is the date on which we have to land. If everything goes well, then it becomes 23rd of August. Okay, it can be 24th of August also, depending upon the calculations which will happen. But it cannot be 25, 26, because if it gets delayed, then what we will do is we will not land. We will keep it for next 1 month. 1 month later only, next again day will come. So it will go to September 20th or 30 days later. Okay, 29 days later, it will have to be scheduled. Okay. Good evening, sir. Yeah. Raghavendra from ANI. सर यासिर न्यूज़ नेशन से दो सवाल है। पहला SCLM को लेकर ही है। स्पेस डेब्रिस जो है एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है किस तरह से इसे हैंडल करें? और फिर दूसरा सवाल चंद्रयान को लेकर ही है, और एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी में आंसर चाहिए उसके लिए कि किस तरह से ये अलग होगा चंद्रयान-2 से, क्योंकि ऑर्बिटर नहीं होगा इसमें, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, किस तरह से अलग होगा? पहला कि स्पेस डेब्रिस के लिए क्या कोई रोड मैप तैयार है? Space debris roadmap making is not possible in G20 nations, because it is not only done by G20 countries, by so many other people, but of course the powerful nations are part of the G20. So we discuss in various fora. G20 is not the only fora for debris.
So guidelines will come only in United Nations fora like the UN Corpus, etc., which is addressing this. So we did not discuss specifically what exactly you have to do for debris removal. So there are no rules here. There are only understanding. Okay. So everybody is working to create some global rules that can be followed. So still nothing is very clear. So that is a status there. Now मैं अब चंद्रयान के बारे में बोलूँगा कि सर चंद्रयान किस तरह से चंद्रयान 2 से किस तरह से अलग है, चंद्रयान 3 क्या स्पेसिफिकेशंस है, मकसद क्या है? सो आपको पता है चंद्रयान 2 लैंडिंग करने के सफल नहीं हुआ है, तो हमने जो किया है कि आप उसके बाहर उससे सभी डाटा हमसे मिले, टेलीमेट्री डाटा ये बोलते हैं, हम टेलीमेट्री डाटा का एनालिसिस किया, हम सिमुलेशन किया और हमको पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उस चंद्रयान 2 पर। हमको ऐसे कार एक्सीडेंट होते तो हमको वहां जाकर उस डेब्री को कलेक्ट करके एनालाइज कर सकता है। ये चंद्रयान 2 चंद्रमा पर गिरा है ना, हमको कुछ डेब्रिस तो नहीं मिला है, तो सिर्फ हमारे साथ जो डाटा वहां से क्या स्ट्रीम किया है, सो डाटा का हम सिमुलेशन किया। हमको पता है देर 2-3-4 बात हुआ है, इसके कारण ये लैंडिंग परफेक्ट नहीं हुआ। सो पहला काम किया गया तो ये सब प्रॉब्लम्स को हमको दूर करना है, तो हमने रिव्यू किया किस किस जगह ये स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तो वहाँ किया है। पहला ये कि हमारे लैंडिंग लेग है, हमारा लैंडिंग लेग चंद्रयान 2 को जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड तक वहाँ डिजाइन फॉर 2 मीटर पर सेकेंड, इफ इट एक्सीड्स मे बी सम लिटिल मोर इट विल स्टे। सो हमने जो किया है हमारा अधिक 50% एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनाया दिस टाइम, एनर्जी अब्सॉर्बिंग कैपेबिलिटी तो डबल किया है। और दूसरा है चंद्रयान 3 पर हमारा प्रोपेलेंट क्वांटिटी तो अधिक किया है, हमारे टैंक का कैपेसिटी इंक्रीज किया, और तो हमारे लैंडिंग के बारे में कोई दिक्कत होते तो हमारे प्राइमरी लैंडिंग नहीं होते तो दूसरा लैंडिंग अल्टरनेट साइड में जाने की क्षमता होगी। सो अधिक प्रोपेलेंट है। तीसरा है ये हमारे सोलर सेल है जो पावर जनरेट करते हैं, सिर्फ और सनलाइट से बारे की तरफ ये होते हैं ना। तो जो अब ये देखे तो चंद्रमा पे खड़े और सूरज की तरफ देखे तो सूरज उसी तरफ होगा, हमारे धरती से जैसे नहीं है, तो हमारे ऊपर सिर के ऊपर ये नहीं जाते, जो जाते हैं सिर्फ और सीमा पर ये दिखाई जाते हैं। सो हमारे सोलर पैनल सिर्फ एक ही डायरेक्शन को लैंडिंग होना है। सपोज लैंडिंग ऐसा नहीं होता तो उल्टा होता तो पावर जनरेशन नहीं होता। सो ये फेलर मोड है। सो हमने जो किया है हमारे चंद्रयान में के चारों फेसेस है ना, सो हमने ये सोलर पैनल अगला एक तो फेस में भी लगा दिस टाइम। सो इवन इफ इट लैंड्स इन अ रॉन्ग डायरेक्शन स्टिल इट विल हैव पावर जनरेशन कैपेबिलिटी। देन 14 है तो हमारा सेंसर्स है, इसमें एक इनर्शियल सेंसर्स है, कैमरास है, रडार अल्टीमीटर है, लेजर अल्टीमीटर है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमने तो बनाया है और इसरो सेंटर्स में जुड़ा है। चंद्रयान 2 लैंडर में हमने एक अनोखी एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है दिस टाइम कॉल्ड लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर। इसमें 2-3 आइस है, उससे लेजर बीम निकलते हैं और लेजर बीम के सहारे से हम रिफ्लेक्ट चंद्रमा के ऊपर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं। इससे हम मेजर करते हैं कितना स्पीड जा रहा है। तो हमारे तीनों स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड, लेफ्ट स्पीड, अप एंड डाउन स्पीड, तो 3 स्पीड्स हमको मेजर करूंगा। तब हम चंद्रमा के ऊपर कुछ नीचे आने के समय ये इंस्ट्रूमेंट की उपयोग होगी। सो इसलिए हमको ये मेजर कर सकूंगा कि कितना स्पीड है, ये हमारे कंट्रोल फीडबैक में जाएंगे। और हमारे सॉफ्टवेयर को भी हमने स्ट्रेंथन किया है। हमने कई टेस्ट करें, हमारा कोल्ड सिमुलेशन टेस्ट है, हमने हेलीकॉप्टर में ये चंद्रमा लैंडर को लेकर हमने एक टेरेन पर ऊपर फ्लाई किया, हमने क्रेन में हैंगिंग करके लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया, और हमने कई टेस्ट बेड बनाई हमारे स्पेस सैटेलाइट सेंटर में, ये सब टेस्ट करके और सॉफ्टवेयर को स्ट्रेस टेस्ट करके फेलियर सिमुलेशन किया। सो जो कुछ हमको सोच सका सब किया अगले दो साल में। इसके बाद सो विद दैट कॉन्फिडेंस हम ये चंद्रयान 3 लॉन्चिंग का इनिशिएशन किया। तो विद दैट वी आर गोइंग, सो होपिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट दिस टाइम। Sir, Vijay from DNS, sir.
Here, sir, this side. Okay. So, what are the challenges in space economy? Challenges in space economy, first and foremost, is it is capital intensive. So you have to invest heavily to create the capability. And return of investment comes very late. See, for example, you build some food industry, it comes next month after the product is launched, maybe in few months. Here it comes after a few years, sometimes 5 years, 10 years. This is the first problem. So you have locked up capital for a long time. Third, the failure possibilities are very high. So sometimes you will become bankrupt. You will not even make any profit. You know, SpaceX was almost near bankruptcy, just the moment they succeeded. So these are the three things. And finally, markets. If you do not have markets, there is no business. So where is a market? Suppose you make a rocket and keep it with you. Is nobody coming to you for launch? Where is a market? So how do you create the market for the rocket? This is again another challenge. It comes out of confidence of the user. Why private companies are coming to India and launching? Because there is a guarantee that it will succeed. And if your satellite is going to fail, nobody will come. If you are making a rocket which will fail more times than succeed, nobody will come. So there are a lot of geopolitical angles also. Even if there are some nations, there are plenty of rockets. Nobody is going there for launch because there are geopolitical situations don't allow. So space is a very complex thing, having all these problems. This is the issue of economy. Yeah, as far as how to make it succeed in space. सर नमस्कार सर टी राघवन फ्रॉम इंडिया टीवी सर या मेरे भी दो सवाल हैं सर हिंदी में जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पहला सवाल SCLM से जुड़ा हुआ है आपने कहा कि आप अब इंडिया उस स्थान पर है कि हम छोटे देशों को मदद कर पाएंगे स्पेस फील्ड में इंडिया एज ए नेशन कितना बेनिफिट होगा ऐसे समिट से एक सवाल ये है दूसरा चंद्रयान-3 से जुड़ा हुआ सवाल कि हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हम पहले ऐसे देश बने जिन्होंने चांद पर पानी को खोज निकाला तो क्या हम चंद्रयान-3 से भी ऐसी कुछ यूनिक फाइंडिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या साइंटिफिक मकसद होगा इस पूरे मिशन का आपने ये पूछा कि हेल्प करने से क्या फायदा होता है मैं आपसे पूछना करते हो हमारे दोस्ती को हेल्प करने से आपको क्या फायदा मिलता है दोस्ती मिलता है ना सो हम दोस्ती से के लिए भी ये करना है हमारे जो नाइबर्स है उससे हमें ये स्पेस के बारे में जो हेल्प करते हैं इस दोस्ती के बात हमने एक साउथ ईस्टर्न एशियन सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस ऑल नाइबर्स उसमें दो पैसा बचाने की और पैसा कमाने की कोई प्रॉब्लम नहीं था हमने ये ऑफर किया फ्री ऑफर किया है अभी भी ये सर्विस कर रहे हैं भूटान में करते हैं नेपाल में करते हैं बांग्लादेश में करते हैं श्रीलंका हमारे तरफ आए बट उन्हें कोई प्रॉब्लम थे उसको यूज नहीं पाया सो फ्रेंडशिप के लिए हम कर सकेंगे और दूसरा काम है कि इससे हमारे इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट मिलेगा तो और एक राज्य में ये डेवलप होते तो हमारे इंडस्ट्री को फायदा होगा तो अनदर मार्केट इज ओपन सो दिस आर द टू इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस देन आपका दूसरा सवाल है कि हम लैंडिंग के बारे में हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग होना ही चाहिए उसके लैंडिंग के बिना कोई इंस्ट्रूमेंट को काम नहीं कर सकता ये क्रैश होते तो देयर आर 5 एक्सपेरिमेंट्स है हमारे 3 है ऑर्बिटर में और 2 है लैंडर में और 2 है लैंडर में रोवर में ये सभी एक्सपेरिमेंट तभी होगा कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करें हमारे इंस्ट्रूमेंट और ऑर्बिटर में सभी वर्क काम करें हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल फ्रॉम लैंडर इस हमारे ऑर्बिटर में जाए तो वापस धरती में आए तो ऐसे एक सीन सोच करो कि सभी काम करते हैं हमारे कम्युनिकेशन लिंक तो खराब है क्या करूं कोई फायदा नहीं सो सभी काम करना है लैंडिंग होना है फिर भी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स ओपनिंग एवरीथिंग हैज टू वर्क सो यही है चैलेंज ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि उसके बिना हमको कोई मेजरमेंट नहीं मिलता सो टेक्नोलॉजी की प्रूविंग चाहिए और कुछ साइंटिफिक आउटकम को भी चाहिए हम सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं जाता हमारे एक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है जैसा चंद्रयान-1 में हुआ यस ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था इसके कारण ही हमको पानी के प्रेजेंस को सर्च कराना और आउटपुट मिला है सो हमको लिए सॉलिड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी है Sir, Aisha here from DD News. Sir, first of all, congratulations on announcing of this date.
You just said that one country was interested in the rocket technology from India. Could you tell us with how many countries you had bilaterals? How many countries did India had bilaterals? Would you like to share details of these bilaterals? And are there any concrete plans which will turn into MOUs between India and the other countries? That's one. And the second one is the startups, which are the major part of the entire space technology ecosystem. And these startups are the future leaders of economy leaders in space technology. So was there anything concrete discussed on bringing together these startups and synergy between the startups in all the G20 countries? And the third one is on Gaganyaan. Can I ask that? So I am lost in the first question, so I have to... Yeah, bilaterals. I asked you about. See, the point in bilateral is that bilateral is a continuing activity. It is not happening today. So SCLM started only yesterday night. We had a dinner, nice dinner, and today we have the SCLM. So I had very little time for bilateral. So only 4-5 only happened. But we have been discussing with so many countries in the past. Which country wants you to build rocket? So everybody I am meeting, they want all to build rockets. Okay, but some of them have potential to build. Okay. See, if Nepal says I want to build a rocket, but they have no place to launch, So there are places where there are nice places for launching. For example, if you look at Africa, if you go to South Africa, there is a place to launch, good place. If you look at the Arabic nations, if you go to Saudi Arabia, they can launch because they have a potential to launch southward. But if you look at some sub-Saharan countries in Africa, they cannot launch even if they want to launch. So we look at the countries which has potential to create launch pads, and not everybody, everybody discuss, but we also understand where it is possible. So with them only we are going to work. And the startups? Okay, now coming to the startups. See, startups is a company who has a potential to grow. You said it correctly. But it depends on various other aspects. Whether they will grow or not grow is to be decided by their own actions and the possible markets that they are going to create. So today we are looking at startups as an innovation place. See, we have seen that in big companies, innovations are difficult. Every big company has a tendency to continue the regular work and scale up. This is their model of working. If you look at any big company, they always work on traditional approaches which they are very confident about, and they scale up in terms of money. But upsetting of the entire sector and new ideas will only come from startups. So sometimes what happens is the startups idea will be picked up by the big companies and they will scale up, not the startups. This also happens. This happens through mergers and acquisitions. So there are possibilities of mergers and acquisitions. And some companies, if they are ready to scale up, potentially there could be a market, their ability to scale up, because you need inflow of capital, inflow of support, and whether they have vision to scale up. All this depends on. Simply we cannot expect that every startup will become big company tomorrow. Not going to happen. But what we are doing is we are helping everybody who want to do these things. We look at the innovative element of it, and such innovative elements we support. See, you would have read the recent article in New York Times talking about India's startup ecosystem expansion. So, even today in G20 meeting, everybody is in praise of the current growth of the... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.